Hello everyone, and this chapter we started from the Panda, and Panda introduction I have already provided to you, but this is a kind of creativity class um, for those who have already missed previous classes. So Panda is a fast, powerful, flexible, and easy to use data analysis library. Okay. And it is used for the data manipulation and built on the top of the Python database. So we already have learned the NumPy, and Panda is basically also developed from the NumPy. In Panda we use the data frame. Data frames are just as a tabular representation of your data. जैसे कि आपको पहले tables पढ़ाया था मुझे शुरू में. So this is a kind of the tabular representation which you are already are familiar with the RDBMS kind of a thing. So let's get started with the pandas. तो पांडा इंस्टॉल करने के लिए आपको जो बता रहे हैं वो वही कि आपको पिक इंस्टॉल पांडास, ठीक है. तो आप उसको करेंगे तो फिर आपके पास पांडा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा. लेकिन मेरे पास आई ऑलरेडी हैव पांडा installed in my computer, so it is not installed. So Jupyter notebook already मेरे पास installed है. Jupyter notebook के लिए और pandas की कुछ से रिलेटेड कुछ Jupyter notebook मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है अपने पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर. तो वो रिकमेंड कि आप लोग भी अपने इस फोल्डर की लिंक कर लें जहाँ पर आप जाकर अपने pandas से रिलेटेड जो नोटबुक्स हैं वो क्लिक कर लें. So I in my pandas folder जो कि मैंने बनाया हुआ है, it is not really required. You can name it anything else as well. Okay. So I'm starting my Jupyter notebook. So Jupyter notebook आपने start कर लिया. So you can start with a new as well, but I already have one notebook um, regarding this class pandas loading files. आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम pandas के अंदर डिफरेंट डेटा सेट्स जो है लोड कर सकते हैं. So I have the some data sets available already in my so there are the different format files for a supermarket data. It's a very basic kind of data which we use to demonstrate how to use the files into the pandas. So there are the Excel file, JSON, and comma separated files, Excel file, JSON, text document, and a comma separated file without headers, and a comma separated text file with the semicolon separator. Okay, so they are the different. We'll also demonstrate how to load data into the pandas from the RDBMS network. Okay. So first thing first, when you install the pandas, जब आपका pandas install हो जाए तो उसके बाद आपको अपनी install करके उसमें सबसे पहली चीज़ है वो import pandas करना है and how to enter. So if the panda is successfully entered, so this imported, so it will not give you an error. The other thing is to load the file. So first we started with the supermarket file. तो सबसे पहली चीज़ हमें pandas से एक वेरिएबल क्रिएट करना था जिसको हमने नाम दिया df का. Why we name it df? It's just because of the data frame. तो हम उसका एक data frame create करेंगे. So df is equal to ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है. इसका वेरिएबल का नाम df भी हो, उसका नाम abc भी हो सकता है. ठीक है. सेम वेरिएबल के जो कंस्ट्रेंट्स हैं जो पाइथन के लिए यूज होते हैं वही यहाँ पे यूज करें. सो df is equal to pandas dot read underscore csv. फाइल का पूरा पाथ दिया है, या तो हम क्योंकि ऑलरेडी मैं pandas के फोल्डर में हूँ और एक जिसके अंदर मेरी फाइल्स का फोल्डर है तो इस तरह से मैंने उसको नाम दिया. अदरवाइज यू कैन गिव इट द एब्सोल्यूट पाथ एज वेल. ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि
अगर सिंगल स्लैश हम देंगे पूरा पाथ देने के लिए तो वो पाइथन उसको कंसिडर नहीं करेगा, इसलिए हमें पाथ देने के लिए हमें उसको डबल स्लैश होना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ द फाइल ऑफ द CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल जो मैंने दी है, और उसको मैं देने के बाद उसको का ऑल्टर एंटर किया। सो दैट्स इट। अब वो मेरे पास कोई एरर नहीं आया, तो इसके नीचे मुझे just to see if it's loaded or not, so I just type here and enter, so you see the data has been loaded on the okay. Now this data frame has columns, तो उसके अंदर सबसे जो फर्स्ट रो होती है वो एज अ कॉलम कंसिडर होती है। तो फर्स्ट रो इज कंसिडर एज अ कॉलम, तो आईडी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, नेम, फाइल, कि उस सुपर मार्केट या डेटा ऑफ सुपर मार्केट जो जिस सिटी के अंदर है और उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज है। Here is this is the index column. ये डिफॉल्ट इंडेक्स कॉलम है जो कि डेटा के अंदर मौजूद नहीं है। सो लेट मी शो इट टू यू कि जो एग्जैक्ट डेटा है वो क्या है। So this is the exact data. Okay. So it has the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columns. Okay. Or so this is the ID first column, but this index column is built in by the used by the pandas itself. Pandas का जो अपना डेटा फ्रेम है वो यूज कर रहा है इसको रो की इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, you can replace this column with some other column as well, which will work inshallah बाद में देखेंगे। So moving to the next thing, say we can also import the full path as well। अगर आपको full path देना है तो उसके थ्रू भी आप उसको import कर सकते हैं। import किया और ये जैसे डेटा इज लोडेड है। Now moving to the JSON file, तो JSON file के लिए हमारे पास एक और हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है df1 इक्वल टू pandas डॉट ईड अंडरस्कोर JSON, और उसमें हमने JSON फाइल का हमने पूरा फॉर्मेट सॉरी पाथ करने के लिए उसको df1, same data is being loaded from the JSON file। Okay. और कमिंग टू द एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल लोड करने के लिए आपको एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा विच इज XLRD। तो XLRD इंस्टॉल करने के लिए जो अपने कमांड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में स्टार्ट करें और फिर इंस्टॉल XLRD करें। वंस दिस इज इंस्टॉल्ड, so you can import the Excel files as well। तो उसका फॉर्मेट सिंपल है, df2 is equal to pandas dot read underscore excel, और एक्सेल फाइल का xlx पूरा पाथ दिया कॉमा, क्योंकि एक्सेल फाइल के अंदर शीट्स, तो आप उसके अंदर शीट का एग्जैक्टली नेम बताएंगे, नंबर बताएंगे कि कौन सी शीट आपको इंपोर्ट करनी है। तो वो आपने जब इंपोर्ट करें तो यू कैन डू दैट। तमाम वो डेटा आपके पास आ जाए। सेम गोज टू दी टेक्स्ट फाइल एज वेल। टेक्स्ट फाइल अगर कॉमा सेपरेटेड है तो एक्सटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप रीड अंडरस्कोर CSV का जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से आप उसको लोड करेंगे। इट विल बी कंसिडर्ड एज एन कॉमा सेपरेटेड फाइल, डजंट मैटर कि व्हाट एक्सटेंशन इट इज लोडेड हियर। हाउएवर अगर कॉमा सेपरेटेड टेक्स्ट फाइल है लेकिन वो कॉमा सेपरेटेड नहीं है, उस बातों का उसके अंदर सेपरेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमा के बजाय सेपरेटर उसके अंदर सेमीकोलन है, तो फिर आपको कॉमा सेप इक्वल टू सेमीकोलन जो भी सेपरेटर होगा वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और फिर डिफाइन करके फिर आप उस फाइल को जो है वो अपलोड करेंगे, तो वो फाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। Sometimes there is a situation when you have the files without any header। ठीक है, तो उसके अंदर फिर अगर सपोज ली कि मैं ये फाइल जो है मेरे पास मौजूद है और वो विदाउट हेडर है, ठीक है, तो इसको मैं अगर लोड करता हूँ तो फर्स्ट रो को ये कॉल हेडर कंसिडर कर लेता है पांडास, और जबकि मेरे फाइल में हेडर नहीं है तो इसलिए इसने फर्स्ट रो के ऊपर जो डेटा था उसको हेडर कंसिडर कर लिया है, विच इज एब्सोल्युटली नॉट फाइल। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मेरी इस फाइल के अंदर हेडर जो है वो नहीं है।
अब आप देखें तो जब इसमें मैंने बता दिया कि मेरी इस फाइल के अंदर हेडर नहीं है, तो इसने मेरा जो फर्स्ट जो है उसको डेटा को डेटा ही कंसिडर किया, और जिस तरह से इसने बिल्ट अपने खुद डिफ़ॉल्ट एक इंडेक्सिंग रोज के लिए ऐड कर दी थी, फिर इसने इंडेक्स ऐड कर दिया कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड दी import दी डेटा विदाउट हेडर। लेकिन अब हमें अगर इसका हेडर डिफाइन करने हैं तो उसके लिए वी कैन डू दिस थिंग्स के df डॉट कॉलम, और हमने एक हेडर जो है उसका नाम हमने डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद उसको हमने वर्क किया, तो फिर वो इसके हेडर से पहुंच गया। So this is a very short intro of how we can add import the files into it, and in the next section I'll brief you about how to import the data from the RDBMS. Thank you very much.